Hello, students. Welcome to your virtual English class. Today, we shall discuss and read a new chapter, Minu and Dino, from your English Reader book. Now, this is a story about a little girl called Minu who meets a big dinosaur kept in a museum. जब मीनू डायनासोर से मिलती है तो उनके बीच क्या बातचीत होती है? व्हाट डायलॉग डू दे एक्सचेंज विद ईच अदर? व्हाट डू दे टॉक विद ईच अदर? दैट इज द स्टोरी ऑल अबाउट. सो लेट अस read this story and enjoy and try to understand. Now, before we go into the story, let us understand what is a museum. A museum is a building where old and interesting things are kept, like jewelry, clothes, statue, weapons, utensils, and pictures, sculptures, and so many other things. So that is what we find in a museum. So who goes to the museum? Minu goes to the museum. Now let us find out मीनू जब म्यूजियम जाती है तो क्या होता है. मीनू, a 10-year-old girl, goes to see a museum. There are many strange things in the museum. Many things are kept in the glass boxes with labels. Meenu reads the labels one by one. As she is moving around, she sees a dinosaur on a table. जैसे ही वो म्यूजियम में जाती है तो सामने देखती है कि टेबल के पास एक बड़ा सा डायनासोर है. She goes near the table and admires the big animal. It had a huge body, long neck, and twinkling eyes. Minu finds its eyes very attractive. Suddenly, the dinosaur starts speaking. मीनू टेबल के पास जाती है और उस डायनासोर को देखकर खूब एडमायर करती है, उसे लाइक करती है, अप्रिशिएट करती है. और डायनासोर का ह्यूज बॉडी होता है. इट हैड अ वेरी बिग बॉडी एंड अ लॉन्ग नेक एंड ट्विंकलिंग आईज, स्पार्कलिंग आईज. मीनू फाइंड इट्स आईज वेरी अट्रैक्टिव एंड सडनली द डायनासोर स्टार्ट स्पीकिंग. हेलो मीनू, आई एम डायनो, द डायनासोर. हाउ आर यू? Meenu can't believe her ears and feels very scared and tries to run away, but Dino calls her back. मीनू को विश्वास ही नहीं होता है कि उससे म्यूजियम का डायनासोर बात कर रहा है. वो डर के मारे घबरा के भाग जाना चाहती है दौड़ के, बट डायनो जो कि डायनासोर है उसे वापस बुला लेता है. Don't be afraid of me. I am your friend. Don't you want to talk to me? Says the dinosaur. Meenu comes near the dinosaur hesitatingly, घबराते हुए, हिचकिचाते हुए, धीरे धीरे डायनासोर के पास वो जाती है. Dinosaur says, I love children. They are very nice. They do not harm anyone. यानी डायनासोर को बच्चों से बहुत प्यार था, वो बच्चों को पसंद करता था. मीनू says, but I have heard you harm others. That's why you are kept here
and not allowed to roam about. No, Minu. When we lived on the earth, we did not harm anyone. We just wanted to live peacefully like other animals. Then why are you kept here? Where are your mama, papa and friends? अगर तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हो तो फिर तुम्हें यहाँ बंद करके क्यों रखा है? तुम्हारे मम्मी पापा और फ्रेंड्स कहाँ हैं? This was what Minu asked the dinosaur. So you see, we have read up to this portion. हमने यहाँ तक आज कंप्लीट कर लिया पढ़ना. And rest of the things we will discuss in the next class. In the next class we shall find out what does Minu ask the dinosaur and what does the dinosaur replies to Minu. दोनों के बीच और क्या बातें होती हैं ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे. Till then, keep reading the chapter and try to understand it. Thank you. And have a nice day.